डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, सबको बताएंगे किस प्रकार से जूम कॉन्फ्रेंस में आना है। जपा टॉक के बाद, आज की जपा वार्ता के बाद में पद्माली प्रभु वहां बताएंगे। Today is birthday of Janak Sutta, all the way from Mauritius. Happy birthday to you, Janak Sutta. तो आज मॉरिशस में रहने वाली हमारी जनक सुता माता जी का बर्थडे है आज, उनको महाराज हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। A few days ago she contacted me and she wanted during this Japa talk session, we remember her, or we offer our blessings, and of course she is seeking blessings from all of you on her birthday today. कुछ दिन पूर्व जनक सुता माता जी महाराज के संपर्क में आए और उन्होंने आज के लिए विशेष करके सभी भक्तों से, वैष्णवों से, विशेषकर गुरु महाराज से आशीर्वाद की याचना की है। So let us all shower our blessings on Janak Sutta by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra one time together. Say Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. And as is the tradition also in ISKCON, we also say happy birthday to you, and you may never take birth again. तो जैसा कि ISKCON में परिपाटी है कि हम उनको बधाई भी देते हैं जन्मदिन की, कि आपको आपका जन्मदिन की शुभकामनाएं हो, और इसके साथ ही आप अब कभी दोबारा जन्म ना ले इस भौतिक जगत में। And you may be happy eternally. और आप शाश्वत रूप से प्रसन्न हो जाएं, सुखी हो जाएं। Birth in this life, in this body, is a beginning or source of suffering. क्योंकि जन्म जो इस शरीर में, भौतिक शरीर में जो जन्म है, वो एक प्रकार से वो दुख है, दुख का कारण है। So we'll be only happy, of course, as we practice Krishna consciousness, we are happy. But finally, that we don't have to take birth again, and we could survive or even thrive or act just as the souls without the body, in relationship with Krishna, dealing with Krishna, and being with Krishna. That is the perfection of our existence as spirit souls. इस संसार में कोई कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके भी प्रसन्न रहता है, लेकिन अंततः जब हम अपने वास्तविक शाश्वत स्वरूप में, आत्मा के रूप में, जब हम भगवान के साथ होते हैं, भगवान के समक्ष होते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, तभी हमें वास्तव रूप से शाश्वत आनंद और सुख का प्राप्ति होती है। Hare Hare. So Lord is waiting, ready to welcome all of us back home. So let us not keep Lord waiting much longer. Let us go back to Him when we give up His present body. तो वास्तव में भगवान जो हमारे परम शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, वो सदैव हमारी राह देख रहे हैं, हम हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनके पास पुनः लौटेंगे और हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे और इस भौतिक देह में दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा नहीं आएंगे।
will not come back into this material world again. Only if we had a complete change of heart. तो हम इस भौतिक जगत में दोबारा तभी नहीं आएंगे जब हमारा पूर्ण रूपेण हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। जब तक नहीं होता है, जब तक नहीं होता है तब तक हम आते रहेंगे। आप चाहते हो, you like this world, you want to keep back again. क्या आप लोग चाहते हो इस भौतिक जगत में रहना? आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है क्या? Yeah, those who do not know, of course. This is another world. Yeah, people don't even know there's alternative, and so then जीना यहाँ, मरना यहाँ, और ये दुनिया छोड़ के जाना कहाँ? This is then we like to just we think there's no choice. We continue to stay in these bodies and in this suffering material existence. But as we have come in contact with Krishna consciousness, and now we know there's alternative, there's way out. We could return to another world. Krishna is awaiting us. जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि इस भौतिक जगत का कोई पर्याय है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, तब तक हमको यही संसार अच्छा लगता है, यहाँ रहना अच्छा लगता है। लेकिन जब हमें कृष्ण भावना में अच्छा लगे या नहीं लगे, there's no choice. हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं होता है। अच्छा लगे भौतिक जगत में या ना लगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के उपरांत हमें पता चलता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता भी है और एक शाश्वत जीवन को प्राप्त करने का तरीका भी है, और हम यहाँ से निकल सकते हैं। दूसरा एक जगत भी है जहाँ जा सकते हैं, एक दूसरा जगत है, शाश्वत जगत है जहाँ हम जा सकते हैं। हरि। So change of heart. Gurudev Goswami has talked about the heart or diseased heart, ritrogam, at the end of the Rasa Panchadhyaya. He said that we are rogis, we have a disease of the heart. And Srila Bhaktivinoda Thakur has said, Enichi aushadhi maya nasi vara lagi, Harinama maha mantra lavotami magi. So Srila Shukdev Goswami says, of course we have hearts, but they're diseased hearts. And Srila Bhaktivinoda Thakur said, there is a medicine, there's a medicine for curing this heart. At Harinam is a medicine to cure the heart, purify your heart. We call that a change of the heart. It's possible. तो श्री शुकदेव गोस्वामी रास पंचाध्याय के अंत में बताते हैं कि किस प्रकार से हम सभी हृत रोगी हैं। वास्तव में हम सबको हृदय का रोग हो रखा है, और काम रोग हो रखा है, हृत रोगी हैं हम। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि इनेची औषधि माया नाशी वाले लागी, हरि नाम महामंत्र लाहो तुम्हें मांगी। तो इस रोग से उन्होंने निवारण बताया, इस रोग की औषधि बताई कि इस हरि नाम के द्वारा हम इस रोग से निवृत्ति पा सकते हैं और हमारे हृदय का परिवर्तन संभव है। आमी बिना बंधु के आचे तुम्हार। Bhaktivinoda Thakur also has said that who else could be and is your friend other than Gauranga, and friend in need is friend indeed. You are in need of
friend, and that your friend is Gauranga, and you needy friend, you diseased friend, you troubled friend in trouble, here is a cure, here's a solution for you. Take the holy name and change your heart, purify your heart. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर गोपाल बताते हैं कि आमी बिना के बंधु आर के आछे तुम्हार, कि आपका और मेरे अतिरिक्त और कौन बंधु ऐसा। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं हम हृदय रोगियों से, हम हृदय के रोगियों से, जिनका कि हृदय जो है कई प्रकार के रोगों से पीड़ित है, बता रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु के अतिरिक्त हमारा और कौन बंधु है, कौन हमारा मित्र है। और वास्तविक मित्र वो होता है जो हमें दुविधा के समय, हमें परेशानी के समय हमारे काम आता है। तो गौरांग महाप्रभु हमारे वास्तविक मित्र हैं जो इस हृदय रोग की औषधि लेकर के हमारे साथ में हमें मदद करने के लिए संसार में आए। Sometimes I heard this from Gopal Krishna Maharaj, always says, ISKCON temples are like hospitals. ISKCON temples are like hospitals. And the devotees of the temple are like our doctors. And the process of Krishna consciousness, including especially chanting, this is the medicine. It talks like that sometimes. श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कई बार कहते हैं कि हमारे इस्कॉन मंदिर जो है वो वास्तव में चिकित्सालय है, जहाँ पे हृदय का रोग का निवारण किया जाता है। और जो हमारे भक्त हैं वो सभी डॉक्टर की तरह हैं। और ये जो कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है, जो ये क्रिया है, ये वास्तव में दवा है, ये मेडिसिन है उन हृदय रोगियों के लिए। One time one very elderly Gaudiya Vaishnava was ill, and doctor had come, and he was doing the diagnosis using his stethoscope, as you are seeing me. So the doctor had a stethoscope, and he was checking the chest region and checking the heartbeat, and then he heard something, which this kind of sound, or what he had heard, he had never ever heard before, and he was greatly surprised. And he was wondering, oh, what is this? Who is this? He's saying something, and he was hearing that through his stethoscope. तो एक बार एक वयोवृद्ध गौड़ीय वैष्णव जब बीमार पड़े तो उनको एक चिकित्सक देखने के लिए आया, और वह उनका निरीक्षण कर रहा था और आला लगा करके, जो स्टेथोस्कोप होता है, लगा करके उनके शरीर को देख रहा था, उनके हृदय भाग को देख रहा था। तो वह एक प्रकार की ध्वनि सुन रहा था, जिसे सुनकर बहुत ही विस्मित हो गया, ये किस प्रकार की ध्वनि आ रही है। उसने ऐसा कभी पहले सोचा नहीं था कि इस प्रकार की कोई ध्वनि हृदय से निकल सकती है, और उसको वो कान लगा के सुन रहा था। So what he was hearing was Hare Krishna, Hare Ram, Hare. So he was hearing, and then he looked at the face, the mouth of that elderly ill Vaishnava. His mouth was hardly uttering. There was no vibration coming out of the mouth. He was not in position to even say the name out loud, but his soul in the heart was chanting, crying for the Lord, calling out for the Lord, and that Hare Krishna utterance was being heard by the doctor as he was doing the diagnosis. तो डॉक्टर ने जो ध्वनि सुनी जो हृदय से, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार के जब उन्होंने महामंत्र को सुना
और फिर उन्होंने उन वैष्णव के मुख की ओर देखा कि क्या ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने देखा उनके होंठ हिल नहीं रहे थे, और उन्होंने देखा कि इस प्रकार से आत्मा है वो भगवान के लिए रो रही है, भगवान को पुकार रही है, महामंत्र का जप कर रही है. So that elderly Gaudiya Vaishnava, I mean, he was not in position physically to chant. He was barely chanting. He was not able to use even his lips or other body parts or the throat to say the mantra. It doesn't matter. These parts don't have to say the mantra. The real chanter, as we have been pointing out during this Japa sessions and Japa talks, real chanter is the soul. And his soul was chanting. His soul was calling out for the Lord. And I thought this is, if you are talking of change of heart, you like to have a change of heart? You're interested in change of heart? There has to be change of heart, of course. Unless heart changes, nothing will change. So, but this is a change of heart, which is a change of consciousness. तो उन वैष्णव का शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था कि वो बिल्कुल हिलने डुलने लायक भी नहीं थे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो महाराज ने भी बताया कि उनका शरीर इतना वयोवृद्ध हो चुका था और इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था कि उनके शरीर का कोई भी अंग हिल नहीं पा रहा था. और उस अवस्था में भी वो आत्मा, जो उनके हृदय में आत्मा स्थित थी, वो भगवान को पुकार रही थी, भगवान के लिए. और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वास्तव में हृदय का परिवर्तन यही है. हृदय का परिवर्तन जब तक नहीं होता है, और हम कई बार अपनी जपा टॉक्स में कह भी चुके हैं कि वास्तविक जो जप करता है वो आत्मा करती है, वो शरीर नहीं करता है, ये मुख नहीं करता है. तो हम वास्तव में हृदय का जो वास्तविक परिवर्तन है वो यही है कि हम हृदय से भगवान का नाम का जप करें, और जब तक ये हृदय में रोग रहेगा तब तक हमें हृदय का परिवर्तन करना ही पड़ेगा इस रोग से निवृत्त होने के लिए. अभी आवाज महाराज की. Yes, Maharaj. Okay. We can hear. Yeah, we can hear you now. Yeah, so that is what Prabhupada always said. And there's a relationship between a revolution in consciousness and the change of heart. Or Srila Prabhupada wanted to see a revolution in consciousness. Otherwise he used to say, oh, the world has seen so many revolutions, French Revolution, Russian Revolution, Britishers did some revolution. So these revolutions, they come and they go, and then another type of revolution, and then revolution, and no solution, and dissolution. So this world goes on, but if there is a revolution in consciousness, then there is a permanent transformation, change, and that's a changed heart. We are changed for sure and forever, changed for better also.
श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मुझे चेतना में क्रांति चाहिए, मुझे हृदय का परिवर्तन चाहिए। इस संसार में बहुत क्रांतियां देखी हैं, रशियन क्रांति देखी, फ्रेंच क्रांति देखी, और ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में भी कई प्रकार की क्रांति हुई, लेकिन वो क्रांतियां आई और गई और उसके बाद में पुनः संसार को किसी न किसी भीषण अवस्था का सामना करना पड़ा। तो जब तक कि हमारी चेतना में क्रांति नहीं होती है, हमारी चेतना परिवर्तित नहीं होती है, हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं होता है, हृदय चेंज नहीं होता है, तब तक हम किसी भी प्रकार का रोग से पीड़ित रहेंगे। और हमको तो वास्तव में हृदय की परिवर्तन होगा, चेतना में परिवर्तन होगा, तभी हम वास्तव में शाश्वत रूप से जो है सुख का, आनंद का अनुभव कर सकेंगे। So this revolution in consciousness, resulting in change of heart, or the purity of the heart, or purification in consciousness. So this whole revolution was inaugurated by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. तो ये जो क्रांति है हृदय का, जिससे परिवर्तन होता है, जो चेतना की क्रांति है जिससे कि हृदय का परिवर्तन होता है, इस क्रांतिकारी आंदोलन का जो शुभारंभ किया वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया लगभग 500 वर्ष पूर्व। And then for some time after Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Nityanand, they are the founders. Ajana lambita bhujo kanaka vadato sankirtanaika pidaro kamalayataksho vishwambharo dvijavaro yugadharma palo vande jagat priyakaro karunavataro. Those karunavataro, there are two avatars, two lords, Gauranga and Nityananda. They're the founding fathers. They are the inaugurators of this revolution in consciousness concept, of this revolution, which leads in the ultimate final change of heart, the purification of heart. So श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, जो गौर नित्यानंद के नाम से जाने जाते हैं, वही वास्तव में आजान लंबित भुजौ कनकावधातो, उन्होंने ही एक्चुअली करुणा अवतार, वही जो है दोनों करुणा के अवतार हैं, और वही संस्थापक आचार्य भी हैं, संस्थापक पिता भी हैं इस संकीर्तन आंदोलन के, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन है, जिसके द्वारा हृदय का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। And then, of course, Senapati Bhakta, commander-in-chief of the Sankirtan army, Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada founded this International Society for Krishna Consciousness, and this Srila Prabhupada's ISKCON organization is executing the will of Gauranga and Nityananda, and their will to see the world transformed, undergo a revolution in consciousness, so that they all have change of heart. And this will of Gauranga and Nityananda is being executed, implemented by the members of the International Society for Krishna Consciousness. तो इस क्रांतिकारी आंदोलन के जो एक सेनापति हुए, सेनापति भक्त श्री प्रभुपाद जी आए, और श्री प्रभुपाद जी ने गौरांग नित्यानंद की जो इच्छा है उसको स्थापित किया इस ISKCON आंदोलन के द्वारा। और आज ये ISKCON आंदोलन पूरे संसार में जो फैला हुआ है, और ये जो है जीवों को जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन है उनका, जिससे कि द्वारा उनका हृदय का परिवर्तन हो रहा है, उसको ये इस आंदोलन में भक्तों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। So we have, by mercy of the Lord, are part of that revolution
we are members of that revolution of Gauranga Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Guru and Gauranga, that would like to see the world undergoing transformation. What good is just information, we say. Information technology, we would like to see that transformation, revolution, change of heart, change of consciousness. तो इस आंदोलन में हम सबकी मतलब जो इच्छा है वो यही है कि आप सब जो इस क्रांतिकारी आंदोलन के भाग बनिए और इस पूरे संसार में जो है कृष्ण भावनामृत को फैला करके और जीवों को उनके हृदय परिवर्तन करने में हम सभी मदद करें। और इस जो गुरु और गौरांग की इच्छा है, जो महाप्रभु की इच्छा है, उसमें हम अपने को सभी जो है स्थापित करके उनकी इच्छा को पूर्ण करके उनकी प्रसन्नता का कारण बने। So I would like to see the world change, world undergo transformation. Yeah, you would like to see this happen? क्या आप सभी संसार का परिवर्तन देखना चाहते हो? संसार में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत है, लेकिन क्या आप संसार का वास्तविक परिवर्तन देखना चाहते हो? Yes. Yes. Only Hari Kirtan says yes. Everyone else. Maybe how में हाथ तो मिला रहे होंगे. So once we were doing Padayatra, I think it was in England, and the theme of our Padayatra was walk for change. Walk for change. We're walking to bring about the change in that country. And of course, our walk, our Padayatra, is to bring about the change in the world, all over the world. This is one of the strategy of Srila Prabhupada, this Padayatra to change the world, change the heart, change the consciousness, revolutionize, transform the world. तो ये एक बार हमने पदयात्रा का आयोजन किया इंग्लैंड में और उसका हमने नाम रखा, उसकी पदयात्रा की जो थीम थी वो थी कि चलिए हम चलें, पदयात्रा करें, चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए चलें, लेट्स वॉक फॉर द चेंज। तो ये श्री प्रभुपाद जी की देन है पदयात्रा, जिसके द्वारा हम लोगों का परिवर्तन करने में उनको मदद करते हैं, उन तक पहुंच करके और एक क्रांति जो है उन तक पहुंचाते हैं और उनको उनके अंदर परिवर्तन लाने के लिए उनको मदद करते हैं। Yeah. It is also said that if you wish to see the world undergoing the change, where should that change begin? You want to see the world undergoing the change has to begin with us. We change. And then we would like to see the world also undergoing that kind of change. So begins with ourselves. यदि हम संसार में, ऐसा कहा जाता है कि यदि हम संसार में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो वास्तव में परिवर्तन शुरुआत कहाँ से होती है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? उस परिवर्तन का प्रारंभ होता है हमारे स्वयं से, हमारे स्वयं के हृदय से। जब हम परिवर्तन करेंगे तभी हम किसी और के परिवर्तन में उसकी मदद कर सकेंगे। So let us have that strong will or great determination to see that the world changes, but then we want to see ourselves changing, so we need to be determined. And we have a strong will to see a change within us and then see the world undergoing the change. हमें बहुत ही तीव्र इच्छा करनी होगी, दृढ़ता के साथ इच्छा करनी होगी अपने स्वयं के परिवर्तन की, तभी हम संसार को परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। जब हम दृढ़ता के साथ अपना स्वयं का परिवर्तन करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना. This is advice of Lord Sri Krishna in Bhagavad Gita. It says, Vyavasayatmika buddhi.
the great determination. This will achieve our target. To bring about the change is possible by having Vyavasaya Atmika, that great determination. And we are fixed on Ekeka Kurunandana, fixed on Krishna, with great determination. तो भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही गुरुनंदना, कि जब हमारी दृढ़ बुद्धि होगी, जब हम दृढ़ता के साथ अपनी बुद्धि को एक में स्थापित करेंगे भगवान में, तभी वो जो परिवर्तन है वो संभव है. बहुशाखा अनंतास्य, otherwise there are many branched, there are so many ideas, this, that, and because of the mind change, mind always changes, mind goes from here, there, sankalp, vikalp, anukul, pratikul, the mind is always ever changing, so we have to capture the mind, and intelligence should tell the mind what to do, what not to do. Then we could be successful in achieving our target of change of heart, change of consciousness. तो बहुशाखा अनंताश भगवान कहते हैं कि यदि हम बहुत सारे विचारों में, बहुत सारे शाखाएं, हमारी बहुत मन की जो है विभिन्न प्रकार की अगर धारणाएं रहेंगी, संकल्प, और मन जो है संकल्प विकल्प निरंतर करता रहेगा, तो फिर हम जो है वो एक एक उन्नंदन नहीं कर पाएंगे, और हमें उसके लिए अपनी बुद्धि को तीव्र और तीक्ष्ण बनाना होगा, जिससे कि हम मन के संकल्प और विकल्पों को रोक सकें, तभी वास्तव में हमारा जो है हृदय का परिवर्तन संभव हो पाएगा. Okay, so I wish you success, and this is a mission of our life. In fact, it's not something that we do one day only, or 1 hour, or just 3 days we do this. This is to be done for the rest of our life. It's the mission of our life. So we fix our vision to achieve the mission. तो आप सभी को मैं इस कार्य में सफलता के लिए मैं आशा करता हूँ आप सबको सफलता प्राप्त हो जो इस कार्य में. और ये हमारा कोई एक दिन का या 3 दिन का ध्येय नहीं होना चाहिए, वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए. हमारी इस प्रकार की दृष्टि बननी चाहिए जिससे कि हमारी जो जीवन का मिशन है, जो हमारा गोल है, ध्येय है, उसको प्राप्त हम कर सकें. Okay, so I will leave you alone to work on your collective vision and then execution of that vision, getting into the missionary spirit, missionary work. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आपके साथ छोड़ता हूँ कि आप एक सम्यक दृष्टि जो है वो विकसित करें और जो मिशन है, जो हमारा मिशन है, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें. हरे कृष्ण. जय श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद.